Hello students. So in last video we have discussed up till human respiratory system. Human respiratory system में हम लोगों ने human respiratory system के सभी types discuss किए, parts discuss किए थे. Nasal cavity, oral cavity, pharynx, larynx, lungs. You have right lung, left lung. Right lung have 3 lobes, left lung have 2 lobes. Diaphragm is the muscle which is situated between the lungs and the stomach. क्योंकि लंग्स और स्टमक कोलैप्स ना हो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, लंग्स और स्टमक कोलैप्स ना हो इसलिए डायफ्राम बना होता है बीच में. तो डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम प्रिवेंट करता है कोलैप्स बिटवीन लंग्स एंड स्टमक. ओके. एंड एल्वियोलाई आर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स जो प्रिवेंट करेंगे हार्मफुल सब्सटेंसेस टू एंटर इनटू योर लंग्स. Alveoli will prevent the harmful substance entering in your lungs. Okay, means alveoli will act as filter जैसा काम करेगा alveoli. जो भी harmful substances हमारे lungs में enter हुए उसको निकाल देंगे. Okay, तो उसके बाद living organism and energy production ये टॉपिक है, राइट. तो उसमें एक पहला क्वेश्चन है, how many atoms of C, H and O are respectively present in the molecule of glucose. ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में C, H और O के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. तो C के 6, H12 and O6. ओके, C6, H12, O6 are the molecules present in glucose, right. So after that, now we will see what happens, how living organism produces energy. living organism energy कैसे प्रोड्यूस करते हैं, राइट. तो कार्बोहाइड्रेट, वी गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फूड सब्सटेंसेस. जो भी खाना हम लोग खाते हैं फ्रॉम दैट वी गेट कार्बोहाइड्रेट. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट इज यूटिलाइज्ड. So carbohydrate which we get from food is utilized and from that carbohydrate energy is obtained. हम लोगों को क्या मिलता है? एनर्जी, राइट. The food we consume or the food we eat, it is utilized by the body and body produces energy and we get energy in the form of ATP. Okay, we obtain energy in the form of ATP. Now what is ATP? ATP is adenine triphosphate. ATP का फुल फॉर्म है adenine triphosphate. ओके, तो अभी ATP कैसे फॉर्म होता है? For formation of ATP, glucose which is type of carbohydrate, right. Glucose is also a type of carbohydrate. जब carbohydrate break होता है it forms glucose. Okay, so formation of ATP, glucose which is a type of carbohydrate oxidize step by step which is called as cellular respiration. Okay, carbohydrate will oxidize step by step and produce ATP. Okay, so that is called as cellular respiration. So cellular respiration is again of two types, aerobic respiration which involves O2 and anaerobic respiration which does not involve oxygen. Okay, cellular respiration is of two types, aerobic which involves oxygen and anaerobic which does not involve oxygen. Okay, so see again how living organism produces energy. See, whatever the food we eat that is utilized by the body and produces energy in the form of ATP. Okay, कार्बोहाइड्रेट, फूड में से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी एंड इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, राइट. नाउ फॉर फॉर्मेशन ऑफ ATP, ग्लूकोज विच इज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट break downs and forms what? Glucose, right. So for ATP formation, glucose which is a type of carbohydrate, now carbohydrate will oxidizes step by step and form ATP, and this process is called as cellular respiration. So again cellular respiration has two types, that is aerobic respiration involves O2 and anaerobic respiration which does not involve O2. Okay, after that now we will see how the glucose is oxidized. ओके, ग्लूकोज कैसे ऑक्सीडाइज होता है? ग्लूकोज 3 स्टेप्स में ऑक्सीडाइज होता है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन. ओके, ग्लूकोज कितने 3 स्टेप्स में ऑक्सीडाइज होता है? फर्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन. ओके,
तो पहला क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ओके, ये ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट होती है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप एंड फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच। ओके, अभी ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप एंड फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच व्हाट, ऑफ पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 एंड वाटर। समझा, व्हाट हैपन्स, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा एंड 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा, किसका, पायरुविक एसिड का, ATP का, NADH2 एंड वाटर। ओके, उसके बाद ये जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एसिटिल कोएंजाइम A में। पायरुविक एसिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम A, राइट। So 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of CO2 are released. उसके बाद में क्या होता है, 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of CO2 रिलीज हो जाते हैं। Now what is NADH2? NADH2 का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इजी। So see what happens in glycolysis. Glycolysis occurs in cytoplasm. देन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है स्टेप बाय स्टेप एंड फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 एंड वाटर। ओके, आफ्टर दैट दिस पायरुविक एसिड, ये जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, एसिटिल कोएंजाइम A में, राइट। सो उसके बाद में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिलीज्ड। ओके, दिस इज ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट इज सेकेंड स्टेप इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, अब ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया। अभी ग्लाइकोलाइसिस में हम लोगों ने क्या देखा, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो गया किस में, एसिटिल कोएंजाइम A में, राइट। तो ये एसिटिल कोएंजाइम A जो ग्लाइकोलाइसिस में हम लोगों को मिला है वो अभी किस में एंटर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। साइटोप्लाज्म से एंटर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, ग्लाइकोलाइसिस किस में हुआ था, साइटोप्लाज्म में, मतलब पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हुआ किस में, एसिटिल कोएंजाइम में, राइट। ये पूरी प्रोसेस कहाँ पे हुई, साइटोप्लाज्म में। अभी ये जो एसिटिल कोएंजाइम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो कहाँ पे एंटर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, वो एंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। Now acetyl part of acetyl coenzyme A is completely oxidized and molecules like CO2, H2O, NADH2, FADH2 are derived. Okay, what happens, अभी ये जो acetyl part है, acetyl coenzyme A का acetyl part वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है and molecules like CO2, H2O, NADH2, FADH2 are derived. Okay. And third one is इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 and FADH2 फॉर्म ड्यूरिंग ऑल अबव प्रोसेस पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन। अभी ग्लाइकोलाइसिस में एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में हम लोगों को क्या मिला, NADH2 and FADH2, राइट। सो NADH2 and FADH2 will participate into the electron transfer chain, will enter into the electron transfer chain. Okay, due to which from NADH2 3 molecules of ATP and from FADH2 2 molecules of ATP are formed. Okay, अभी ये NADH2 और FADH2 हम लोगों को कहाँ मिला है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, राइट। तो NADH2 से we will get 3 molecules of ATP and FADH2 से will get 2 molecules of ATP, right. Besides ATP, water molecules are also formed in this reaction. ATP के साथ water molecules भी हम लोगों को मिलता है in what, electron chain reaction में, okay. This reaction also takes place in mitochondria, ठीक है. So glycolysis takes place in cytoplasm, tricarboxylic acid cycle takes place in mitochondria, and electron transfer chain also takes place in mitochondria. Now what is full form of FADH2? FADH2 means flavin adenine dinucleotide, okay, flavin adenine dinucleotide.
Thus, the molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration and molecules of CO2 and H2O are produced along with the energy. Aerobic respiration में क्या होता है? Glucose is completely oxidized and you get molecule of CO2, H2O and energy. What do you get? The final product is CO2, H2O and energy, and glucose is completely oxidized in aerobic respiration. Okay, so here we complete with the aerobic respiration. What is included in aerobic respiration? How glucose is oxidized. Okay, glucose is oxidized in 3 steps. First is glycolysis, second is tricarboxylic acid and third is electron transfer chain. Okay, glycolysis कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में. यहाँ पे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है एंड यू गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 एंड वाटर. राइट, फिर पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है किसमें? एसिटिल कोएंजाइम A में, एंड NADH2 एंड CO2 के 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं. फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में क्या होता है? ये जो एसिटिल कोएंजाइम A जो हम लोगों को ग्लाइकोलाइसिस में मिला है वो एंटर होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में. अभी एसिटिल पार्ट जो है, एसिटिल कोएंजाइम का एसिटिल पार्ट वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड वी गेट व्हाट? मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, H2O, NADH2 एंड FADH2. Okay, after that third one is electron transfer chain reaction. यो अभी इधर हम लोगों को जो मॉलिक्यूल्स लाइक NADH2, FADH2 जो हम लोगों को ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में मिले हैं वो एंटर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में, एंड फ्रॉम NADH2 you get 3 molecules of ATP and from FADH2 you get 2 molecules of ATP and along with this you get water molecules also, and ये पूरी प्रोसेस किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में. Okay, so what happens overall in aerobic respiration? Glucose is completely oxidized and you get molecules of CO2, H2O and energy. Okay, after that next topic in your textbook is energy currency. Now see this diagram. So first thing is ATP. ATP means adenine triphosphate. Okay, it has adenine, ribose and phosphate bond with more energy. Okay, adenine triphosphate has adenine, ribose and phosphate bonds with more energy. Now for production of energy, this ATP will convert into ADP. ADP means adenine diphosphate. It has adenine, ribose and inorganic phosphate. This phosphate bond with more energy is converted into inorganic phosphate from which the energy is released. Okay, ATP is converted into ADP and the phosphate bond which has more energy is converted into inorganic phosphate which releases the energy, and this is called as ATP energy currency. Okay, so now next thing we will see what is given. If there is insufficient amount of carbohydrate in the body due to exceptional condition like fasting and hunger, then lipids and proteins are used for energy production. In cases of lipid, they are converted into fatty acids, whereas proteins into the amino acids. Fatty acids and amino acids are converted into acetyl coenzyme A and energy is obtained through complete oxidation of acetyl coenzyme A by the process of Krebs cycle in the mitochondria. What do you mean by this paragraph? See, when there is insufficient amount of carbohydrate, जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, like when we are fasting or we are hungry for a long time, that time carbohydrates are in less quantity in our body. So carbohydrate को कौन replace करता है? Lipids and proteins. Lipids and proteins are already stored in your body. तो carbohydrate जो energy produce करता है उसको replace कौन करेगा? Lipids और proteins. So lipids are converted into what? Fatty acids, and proteins are converted into amino acids. For what? For production of energy. तो ये जो लिपिड्स कन्वर्ट हुए हैं फैटी एसिड्स में और प्रोटीन्स कन्वर्ट हुए हैं अमाइनो एसिड्स में, वो वापस कन्वर्ट हो गए किस में? एसिटिल कोएंजाइम ए में. राइट, जैसे हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में. तो जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं तब लिपिड्स और प्रोटीन्स कन्वर्ट हो गए किस में? फैटी एसिड्स में और अमाइनो एसिड्स में, एंड वापस वो कन्वर्ट हो गए एसिटिल कोएंजाइम ए में. क्यों? टू प्रोड्यूस द एनर्जी. ओके, so when there is
lack of carbohydrate in your body, lipids and proteins will convert into acetyl coenzyme A and form the energy in the process, and this process by the process of Krebs cycle in the mitochondria. Okay, see here, process of energy production through aerobic respiration of carbohydrate and fat. Okay, carbohydrate, proteins और फैट्स से एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? We have already discussed this, glycolysis. So lipids get converted into what? Fatty acids. Carbohydrates by the process of glycolysis converts pyruvic acid into acetyl coenzyme A, and proteins converts amino acids, and finally fatty acids also get converted into acetyl coenzyme A, and amino acids also get converted into acetyl coenzyme A by the process of Krebs cycle and produces CO2, H2O and energy. As I have already told you that in aerobic respiration, glucose is completely oxidized, and what do you get is CO2, H2O and energy. Okay. So next topic after aerobic respiration is energy production in microorganism through anaerobic respiration. पहले हम लोगों ने क्या देखा था? Aerobic respiration which involves oxygen. Now we will see anaerobic respiration which do not involve oxygen, right? So anaerobic respiration किस में होता है? In bacteria. Anaerobic respiration takes place in bacteria. Okay. Some organism cannot live in presence of oxygen. Example is bacteria. Okay. Such living organism have to perform anaerobic respiration for energy production. Now as this organism cannot live in presence of oxygen, वो oxygen के presence में नहीं रह सकते, तो they have to produce energy in the presence of anaerobic respiration by the process of anaerobic respiration. Okay. Now glycolysis and fermentation are two steps of anaerobic respiration. Okay. Anaerobic respiration के दो steps क्या है? Glycolysis and fermentation. And aerobic respiration के क्या steps थे? There were 3 steps, that is glycolysis, tricarboxylic acid cycle and electron transfer chain. Okay, but anaerobic respiration के बस 2 steps है, that is fermentation and glycolysis. Okay, glucose is incompletely oxidized and less amount of energy is obtained in this type of respiration. What happens in this type of respiration? Glucose is completely oxidized and you get energy. Pyruvic acid produced through glycolysis is converted into organic acid or alcohol with the help of some enzyme, and this process is called as fermentation. Okay. Energy production in microorganism through anaerobic respiration. Now see, some organism cannot live in the presence of oxygen. Example is bacteria. Bacteria cannot live in presence of what? Oxygen. So they perform what? Anaerobic respiration to produce the energy. Now what happens in this anaerobic respiration? जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों ने देखा था ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, बट इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, जिससे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन होती है. ओके, क्योंकि ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ है, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, सो वी विल गेट लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो अभी क्या होगा? पायरुविक एसिड जो है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा किस में? ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल में. ओके, पायरुविक एसिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल. एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा था? एसिटिल कोएंजाइम ए में. एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? फर्मेंटेशन. So here we complete with anaerobic respiration. So in today's video we have completed aerobic respiration, then three steps of aerobic respiration, then anaerobic respiration, and 2 steps of anaerobic respiration. So I hope you like this video. अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया तो please hit the like button. If you have any doubts or queries, please let me know in the comment section. Please do share and also subscribe the professor.